अरे मेरे को ना देखे चलेगा, लेकिन बोर्ड को तो दिखेगा। ओवरी का स्ट्रक्चर डिस्कशन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। So let's start. Structure of ovary. Diagrammatically discussing. डायग्राम होगा, बीच में चारों तरफ लेबलिंग होगा, ठीक है। Matured follicle or Graafian follicle will be close to the surface of ovary under the influence of which hormone? Infinity का question है ये. Matured follicle or Graafian follicle is very much close to the wall of ovary under the influence of FSH. So ये जो first structure है, these are actually primary follicle. And endocrine topic में थोड़ा सा idea दिया था इसके बारे में. I've told you we will discuss elaborately regarding the structure in the reproductive system. Second structure जो मैंने बताया, that is called as actually secondary follicle. The third structure which is formed is called as what? Tertiary follicle. Tertiary follicle में you will find the first time the antrum, and that antrum will be filled with the fluid called as what? Liquor folliculi. Liquor मतलब liquid, as it is present in the follicular cells or follicle, that is why it is called as liquor follicle. And this is the large matured follicle or Graafian follicle. And Graafian follicle में follicular cells से वो पूरा peripheral हो जाएगा, so large antrum will be there, fluid filled space. And we will first time find here the zona pellucida.
तो जूना पेलुसिडा फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द टर्शियरी फॉलिकल. That comes to the leveling part. यहाँ पे आपको immediately just after the ovulation we will get the blood clotted, and this blood clotted filled structure which is just after the ovulation called as what? The corpus hemorrhagicum. Corpus hemorrhagicum. Anyway, आप मुझे कंफर्म करेंगे तो हम लेबलिंग स्टार्ट करेंगे. ये है साइकिल which is occurs in the ovary, so called as ovarian cycle. स्टार्ट करेंगे. So let's start the leveling part of this topic. This is actually ovarian wall, and the ovarian wall is formed of 3 layers. First one is that is the outer. The outer हो जाएगा, that is actually peritoneum. The outer is peritoneum, and you know peritoneum actually is coelomic epithelium. Coelomic epithelium, that is peritoneum, the outer. The middle is actually tunica albuginea. Tunica albuginea क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, हम लोग पढ़े. And the inner layer is called as germinal epithelium. Germinal epithelium means it is formed of what? Cuboidal. याद आया? Germinal epithelium टिश्यू चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि cuboidal, germinal epithelium. So these are the 3 layers: peritoneum, tunica albuginea. Internally, it is germinal epithelium. This is the ovarian wall. This is primary follicle. This is secondary follicle. देखिए, white is called as follicle now with granulosa cells और follicular cells. बड़ा अगर डिफरेंस देखें कि प्राइमरी फॉलिकल एंड सेकेंडरी फॉलिकल में साइज का डिफरेंस है. एंड व्हाट इज दैट साइज? ड्यू टू द मोर नंबर ऑफ granulosa cells. As you can see very clearly, प्राइमरी फॉलिकल में granulosa cells का क्वांटिटी कम होता है, सेकेंडरी फॉलिकल में granulosa cells का क्वांटिटी ज्यादा होता है, इसलिए बिगर साइज हो गया है. बट कॉमन क्या है, सिमिलरिटी क्या है? ना बोथ कंटेन्स द प्राइमरी oocyte. Both contains the primary oocyte. And this primary oocyte present in
Which stage? Anybody can tell me? थोड़ा सा मैं रिमाइंड करना चाहूंगा आपको. आप लोग पढ़े हैं oogenesis, spermatogenesis, right? oogenesis है मल्टीपल स्टेप्स. पहले होता है मल्टीप्लिकेटिव फेज, देन होता है ग्रोथ फेज, देन मैच्यूरेशन फेज. मल्टीप्लिकेटिव फेज मींस माइटोटिक फेज. Growth phase means cytoplasmic growth, and vitellogenesis, that is the formation and synthesis of yolk. Growth phase में size big हो जाता है because of the synthesis of cytoplasm with yolk, and the synthesis of yolk is called as vitellogenesis. इसलिए size big होता है growth phase में. No mitosis, no meiosis. Third is maturation phase. Maturation phase is demarcated by meiosis 1 and meiosis 2. ठीक है? And the second point is ovulation. Oogenesis is a process of discontinuous. In the female, it is discontinuous. Discontinuous का मतलब क्या है ना? Partially occurs before birth, partially during the puberty, मतलब before puberty, within the childhood stage, and maximum or rest will be occurs after the puberty, मतलब adolescence. ये continuity नहीं है, discontinue process है. But spermatogenesis in case of male is a continuous process. Starts after the commencement of puberty and will continue till death. No division or no, that is what na break. समझे? तो ये जो oogenesis हम प्रोसेस देख रहे हैं, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म हो जाता है बिफोर पर्चुरेशन, बिफोर बर्थ. And what is that number? The millions in each ovary. So what is the number of primary follicle present in both ovary? 2 million. Right? So birth हो गया. बर्थ के टाइम में ये प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट है. इसमें जो प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, दैट प्राइमरी oocyte ऑलरेडी क्रॉस्ड ग्रोथ फेज, एंटर इनटू meiosis 1, मतलब मैच्योरेशन फेज में ऑलरेडी एंट्री कर चुका है. मतलब meiosis 1 में एंट्री कर चुका है, बट meiosis 1 में प्रोफेज 1 में अरेस्टेड हो गया है. समझे कि नहीं? सो डिप्लोटिन ऑफ प्रोफेज 1, दैट इज द टाइम where this primary oocyte present in the primary follicle arrested. इसी arrested stage में रहेगा from birth to puberty. ये जो 11 to 12 years हो गया, जिसको हम लोग childhood stage बोलते हैं, कुछ ज्यादा changes नहीं होता है, no major changes. Only the change is what? ये जो millions of primary follicle है, primordial follicle है, इसका ऑल्दो डीजेनरेशन होगा, नंबर डिक्रीज करेगा फ्रॉम मिलियंस टू 60-80,000. तो ईच ओवरी में 2 मिलियन था, डीजेनरेशन हो गया ड्यूरिंग द चाइल्डहुड स्टेज. दैट इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर एट्रेसिया. क्या बोलते हैं उसको? यस, फॉलिकुलर एट्रेसिया मींस प्राइमरी फॉलिकल एट्रेटिक हो जाता है. एट्रेटिक मतलब डीजेनरेशन. So इसी जो टेक्निकल वर्ड है, ये सबसे एनसीईआरटी बेस्ड लाइन है कि follicular atresia gives rise to the production or formation of, sorry, that gives rise to the number of the primary follicle left at the time of puberty is only 60 to 80,000 per ovary. तो कितना हो जाएगा बोथ ओवरी में? 1,20,000 to 1,60,000. बात को समझे? ये है क्वेश्चन. क्लियर है? अब देखिए, जैसे ही प्यूबर्टी आया, ये प्राइमरी फॉलिकल चेंज होकर सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, मतलब सेकेंडरी फिर टर्शियरी में कन्वर्ट होगा. टर्शियरी में जब कन्वर्ट हो जाएगा, इसके अंदर जो प्राइमरी oocyte था वो चेंज होके बन जाएगा सेकेंडरी oocyte. क्या बन जाएगा? सेकेंडरी oocyte बना, मतलब meiosis 1 फिनिश. meiosis 1 में अरेस्टेड था प्रोफेज 1, अब meiosis 2 हो गया, स्टार्ट हुआ meiosis 2, लेकिन meiosis 2 फिनिश नहीं हुआ है. किस स्टेज में अरेस्टेड होगा? मेटाफेज 2. तो ये जो ओव्यूलेशन के टाइम में ये रिलीज हो रहा है, दिस इज एक्चुअली नॉट ए ओवम, ऑल्दो सेकेंडरी oocyte. तो सेकेंडरी oocyte आपको कहां मिलेगा? टर्शियरी फॉलिकल, मैच्योर्ड ग्रेवियन फॉलिकल एंड ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन, राइट? तो इन व्हिच स्टेज इट इज अरेस्टेड? मेटाफेज 2. तो फिर भाई हम ये बोल सकते हैं प्रैक्टिकली
कि नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में कोई ओवम फॉर्मेशन होता ही नहीं, ठीक है, बट प्रैक्टिकली, बट एज पर द रूल हम इसको ओवम ही बोलेंगे. इट इज ए एग, इट इज नॉट अ ओवम, इट इज ए एग इन विच स्टेज, secondary oocyte stage. It is a egg being which stage? Secondary oocyte stage. Arrested in metaphase 2. जब fertilization होगा, sperm जब penetrate करेगा, the penetration of sperm into the secondary oocyte will initiate the completion of the meiosis to finish, so that the ovum will form. तो मतलब ये हम बोल सकते हैं कि ओवम तभी फॉर्म होगा जब स्पर्म पेनिट्रेट होगा. अगर स्पर्म पेनिट्रेट नहीं हो रहा तो ओवम भी फॉर्म नहीं होगा. तो डीजेनरेशन ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल्स एंड डीजेनरेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte विल बी ऑकर इफ द फर्टिलाइजेशन नॉट ऑकर. बात को समझे? बाकी रेस्ट में आपको समझाता हूं विद लेवलिंग. प्राइमरी oocyte arrested in prophase 1. आप चाहे तो लिख सकते हैं डिप्लोटिन ऑफ प्रोफेज 1. This is tertiary follicle. This is antrum with liquor follicule. Zona pellucida. This is secondary oocyte. तो यहाँ पे आपका secondary oocyte बन गया. Arrested in which phase? Metaphase 2. ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं मेडुला. एंड जो आउटर पार्ट हो गया दिस इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स. तो मेडुला is actually with connective tissue and blood vessels. So medulla, ovarian medulla and ovarian cortex. Ovarian medulla में आपको क्या मिलेगा? Connective tissue and blood vessel. लेकिन ovarian cortex में क्या मिलेगा? Ovarian follicle. तो क्वेश्चन आ गया, ovarian follicle प्रेजेंट कहाँ पे है? cortex में है कि medulla में है? Yes. So ovarian follicles are present in the cortical part, not in the medullary part. This is mature follicle or Graafian follicle. This is zona pellucida. This is secondary oocyte. Now, यहाँ पे इधर देखिए सब लोग, यहाँ पे देखिए एक रेड कलर का शेड मैंने कर दिया, दिखा? That is actually the structure called as cumulus oophrus.
cumulus oophorus or discus proligerus. तो एक्चुअली ये है क्या, मैं बता देता हूँ। देखो क्यूमुलस यूफरस और डिस्कस प्रोलिजरस ये एक्चुअली होल्ड किया हुआ है, एक टाइप का ब्रिज है, एक टाइप का कनेक्शन है जो कि सेकेंडरी oocyte को होल्ड किया हुआ है। समझ में आया कि नहीं? सो सेकेंडरी फॉलिकल आर सस्पेंडेड, secondary oocyte are suspended into antrum with the help of what? Cumulus ufers. समझे कि नहीं? क्योंकि ये तो आपका कौन सा हो गया ना, दिस इज योर एंट्रम, ये तो एंट्रम है विथ योर लिक्विड फॉलिकल। ये जो सस्पेंडेड हुआ किसके थ्रू हुआ है ना, क्यूमुलस यूफरस। एंड ऑल द सेल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द मैच्योर्ड ग्राफेन फॉलिकल्स आर कॉल्ड एज व्हाट ना, फॉलिकुलर सेल्स। एंड मैंने आपको एंडोक्राइन चैप्टर में बताया था कि दिस फॉलिकुलर सेल्स आर कंसर्न्ड विद द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। याद आया? एंडोक्राइन पार्ट मैंने उस चैप्टर में बता दिया था, सो काइंडली रिफर टू दैट चैप्टर। नाउ we will get another type of cells here. अब मैच्योर्ड फॉलिकल और ग्राफीन फॉलिकल देखेंगे तो आपको दो टाइप का सेल मिलेगा, मतलब लेयर मिलेगा। वन लेयर इज इंटरनल कॉल्ड एज theca externa, sorry internal, and the cells which is present outside is called as what? Na theca externa. So theca externa and theca interna, and all these with follicular cells or granulosa cells. But the thing is, theca interna is secretory, but theca externa is non-secretory. Non-secretory मतलब they will secrete estrogen or not secrete the estrogen, not secrete the estrogen. But remember, all are formed of what? The follicular cells or granular cells. तो जहां पे मैंने सिक्रेटरी लिख दिया आप मेंशन कर सकते हैं कि सिक्रेट एस्ट्रोजन। हमने एंडोक्राइन चैप्टर में पढ़ा था, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल्स और नहीं जा रहा हूं यहाँ पे। बस खाली याद रखना कि जहां पे फॉलिकुलर सेल्स है, ग्रैन्युलोसा सेल्स है, वो एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है, बट नॉट थेका एक्सटर्ना। थेका एक्सटर्ना इज एक्चुअली नॉन सिक्रेटरी सेल्स, ये एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट नहीं करता, बट इंटरनल विल सिक्रेट अलोंग विद द क्यूमुलस यूफरस। बाकी जो साइड में जो भी आपको फॉलिकुलर सेल्स दिख रहा है, ये सब सिक्रेट करेगा एस्ट्रोजन, राइट? तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रोजन आप लोग पढ़े हैं endocrine chapter में, and we will discuss just after this topic we will discuss the menstrual cycle. वहां पे हम लोग देखेंगे कि ओव्यूलेशन से जस्ट पहले, just prior to ovulation, ovulation supposed to be a female having, the menstrual cycle timing is 28 days, sorry 28 days supposed to be the menstrual cycle. So what should be the day of ovulation? 14 minus 14 करेंगे हम लोग, हर जगह -14 करेंगे। सपोज टू बी किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइमिंग है, पीरियड है 30 डेज, सो व्हाट शुड बी द डे ऑफ ओव्यूलेशन? 16 -14। तो सपोज टू बी 28 डेज ले रहे हैं तो 14 डेज हो गया डे ऑफ ओव्यूलेशन। तो 13 डेज में क्या होगा ना, ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत हाई हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि estrogen secretion very high just prior to ovulation under the influence of the matured graphene follicle, because matured graphene follicle have the number of follicular cell or granulosa cells are very high, and जो कि high quantity of estrogen secrete करता है, मैं उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा in the menstrual cycle. So coming to the next point,
This is actually ovulation. And ovulation of what? The secondary oocyte. Already मैं लिख दिया हूँ. Secondary oocyte arrested in metaphase 2. वही कंटिन्यू करेगा हर जगह. Now the structure which is formed just after the ovulation is called as corpus hemorrhagicum. Corpus hemorrhagicum. And what is the meaning of corpus hemorrhagicum? Now it is a blood-filled structure formed just after ovulation. Now corpus hemorrhagicum gives rise to corpus luteum. Corpus luteum gives rise to the degenerated corpus luteum called as corpus albicans. डिटेल्स हमने एंडोक्राइन में बता दिया था, डायग्राम में कौन सा हार्मोन क्या सीक्रेट करता है वहां पे बता दिया, तो रेफर टू दैट चैप्टर. HA होगा, HA होगा, HAGICUM, HAGICUM, हेमोरेजिकम. कंप्लीट है. जल्दी. चले आगे, हो गया सबका. लेट्स मूव. जो एट्रेसिया वगैरह मैंने आपको समझाया है, नंबरिंग वगैरह, वो सब ओवुलेशन टॉपिक में हम लिखा देंगे. आप सॉरी oogenesis टॉपिक में लिखा देंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ oofarectomy? Surgical removal of what? It is also called as ovariectomy. Surgical removal of ovary. Hysterectomy का मतलब क्या है? Surgical removal of uterus.
Which among the following, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं. ऑप्शन है कैस्ट्रेशन, वैक्सेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, hysterectomy, oophorectomy. How many of the following are the method of contraception? बोलिए. How many of the following are method of contraception? And with explanation, you have to tell me why not others. What is the definition of contraception? इस चैप्टर के साथ वो नेक्स्ट चैप्टर पूरा लिंक है. What is the definition of contraception? Prevention of pregnancy without interfering with the normal reproductive life. ये पॉइंट भी याद रखना कि खाली प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने से वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं होगा. विदाउट इंटरफियरिंग विद द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ. बताइए, अगर कैस्ट्रेशन कर देंगे तो टेस्टिस रिमूव हो जाएगा, तो मेल सेक्सुअल कैरेक्टर विल बी लॉस्ट. सो इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. वैसेक्टोमी अगर करेंगे तो everything will be as usual normal, but the semen is without sperm because the sperm conduction will be prevented. So it should be. Tubectomy भी होगा वही. Tubectomy करने से क्या होगा ना, everything will be usual, but the ovum will be not conducted to reach the ampulla, but the fertilization will not occur. Hysterectomy कर देंगे तो surgical removal of uterus. Uterus अगर remove कर देंगे तो menstrual cycle, menstrual bleeding stop हो जाएगा. Because menstruation in the female is ultimately because of ovarian cycle or uterine cycle. क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो menstrual cycle है उसमें दो इवेंट साइमल्टेनियसली होता है. वन इवेंट इन द ओवरी, अनदर इवेंट इन द यूटेरस. सो ओवरियन साइकिल मैंने आपको शो किया अभी, और दूसरा साइकिल कहाँ पे होता है, यूटेरस. तो अगर यूटेरस को आप रिमूव कर देंगे तो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ क्या होगा, अफेक्टेड होगा. अफेक्टेड होगा. Normal reproductive life will affected. So it should not be a part of what ना contraceptive. बात तो समझेगी नहीं. So hysterectomy को हम लोग कभी भी contraceptive के तौर पे ट्रीट नहीं कर सकते हैं. बाकी बचा oophorectomy obviously surgical removal of what ना ovary. ये क्वेश्चन आता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. लिखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं. vulva. Female external genitalial organ. Female external genitalial organ is called as vulva. Let's have a diagram of this.
जल्दी करना. So this is the structure of the vulva. The external genitalial organ of female. There are two folded part of skin. So outer folded part of skin is called as labia majora. The inner is called as what? Labia minora. Labia minora के यहाँ पे indicate करिए इस पर. Now questions आता है कि which structure of the female reproductive system is homologous to the male? कौन होगा? Clitoris. Why so? Homologous का मतलब क्या है? Origin same की function same. So what what origin is same with respect to the this clitoris of female? The male, the glands or penis. Common origin क्या है? ना दोनों का ही origin एक ही jaw layer से हुआ है, and that to be it is covered with the prepuce. हम लोग पढ़े थे मेल में प्रीप्यूस था, फीमेल में भी प्रीप्यूस. So this is clitoris and this is prepuce of clitoris. This is mons pubis with hair. ये जो बीच में आपको एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इनर फोल्डेड स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं? That inner folded structure is called as vestibule. The vestibule contains two openings. The one upper opening is called as what? Urethral opening. Or urethral orifice. The second opening is the opening with vagina called as vaginal orifice. तो आपको समझ में आ रहा है? Communicating the urethra and which is communicating the vagina. So vaginal orifice is communicating with the vagina, whereas urethral orifice communicating with the urethra. So urine passes through the urethral orifice, where the copulatory canal and the birth canal is vaginal orifice. Now, because there are two different type of gland present in that is vestibule.
वेस्टिब्यूल में प्रेजेंट है इसीलिए उसका नाम है वेस्टिबुलर ग्लैंड. And the first vestibular gland is called as Skinny's gland. तो Skinny's gland का लोकेशन देखिए तो कहां पे है? In between the urethral orifice and vaginal orifice. Whereas other vestibular gland is present, that is called as Bartholin's gland. Bartholin's glands का लोकेशन क्या है? Either side of vaginal orifice, below the labia minora, correct? That is the location of Bartholin. Which is paired and which is unpaired? The Bartholin is paired, Skinny's is unpaired. मैं आपको difference function लिखा दूं. This is called as forchit. This is called as part of perineum. And this is anus. जो mons pubis है, that mons pubis with fatty tissue. Cushion का काम करता है. That mons pubis with fatty tissue act as a cushion with the hair, pubic hair. So pubic hair बोलते हैं. Because it is present in the mons pubis, so called as pubic hair. बाकी समझ में आ गया आपको? डिटेल्स में और ज्यादा जाना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस में यहाँ पे आता है Bartholin's gland, Skinny's gland, urethral orifice, vaginal orifice, then it is homologous structure कौन किसके साथ. So we are moving to the accessory gland. चले आगे. नहीं हुआ? क्या बाकी था? जल्दी. हो गया. अभी हम चलते हैं नेक्स्ट. एक्सेसरी ग्लैंड के अंदर नंबर 1 वेस्टिबुलर ग्लैंड. वेस्टिबुलर ग्लैंड अभी हम डिस्कशन कर रहे थे. नंबर 1 का नंबर ए ग्रेटर वेस्टिबुलर एंड लेसर वेस्टिबुलर. Greater vestibular, otherwise called as Bartholin's gland. Paired on paired क्या होगा? Paired. Present either side of vaginal orifice. Below labia minora. It actually secrete the alkaline fluid
यू नो फॉर्म अगर एसिडिटी पीएच के कांटेक्ट में आएगा तो डेथ हो जाएगा. एंड urethral orifice and vaginal orifice are very close. So what the urine actually released? So some part of the urine or some quantity of urine will be present in the vulva, in the outer surface. That urinary acidity may kill the sperm, and that is why the Bartholin's gland, which secrete the alkaline fluid, will neutralize. So secrete alkaline fluid, which neutralize the urinary acidity. Number B, lesser vestibular, otherwise called as Skinner's gland. Lesser vestibular or Skinner's gland, that is single in between vaginal and urethral orifice. And it secretes mucus, which helps in lubrication. Mucus कहीं पे भी होगा, उसका एक ही कॉमन फंक्शन है, क्या है? Lubrication. Lubrication of sperm and during copulation. During the copulation, it also lubricates the vaginal wall, so make the easy and that is frictionless copulation. So number B हो गया ये. So this is all about the vestibular gland. अभी हम लोग नंबर 2 में आएंगे, mammary gland. First point which is important, the mammary gland is a modified sudorific gland or modified sebaceous gland. Modified sudorific means sweat gland. Because sweat gland secrete the alkaline fluid which is watery or oily. ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना, भूलने की कोशिश भी मत करना कि फ्लूइड क्या है, वाटरी फ्लूइड है कि ऑयली फ्लूइड है. अगर वाटरी है तो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होगा, अगर ये ऑयली फ्लूइड है तो मॉडिफाइड सिबासियस होगा. क्योंकि मिल्क वाटरी है तो मैमरी ग्लैंड क्या हो गया ना, मॉडिफाइड स्वेट और सुडोरिफिक ग्लैंड. जल्दी जल्दी करिएगा.
देखिए एम्पुला मैंने किया है, देखिए एम्पुला करिएगा, यहाँ पे भी देखिए एम्पुला है, कहाँ कहाँ एम्पुला है, क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का, मेल में भी है फीमेल में भी है। मेल में कहाँ था, the beginning point where the vas deferens starts, the end of the seminal what now, that is epididymis, cauda part or corpus part की head part, which part of the epididymis contains the ampulla, head corpus cauda, कौन था cauda, फीमेल में आपका कहाँ था फैलोपियन ट्यूब में, और कहाँ पे है मेमोरी ग्लैंड। ये सब जो है डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू। And this is actually the adipose tissue. So coming to the labeling part. करते हैं लेबलिंग। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आता है कि सीक्वेंस क्या है, मैं बता देता हूँ पहले। This is actually ribs। कहाँ पे क्या लोकेशन है देख लीजिए, दिस इज रिब्स। So in between the ribs, it is called as intercostal muscle। तो पढ़े
and this is the muscles called as pectoralis major muscle, जो chest में muscles होता है. So that is why we can say the location of the mammary gland is pectoral in position either side of the sternum. One pair. Now, this is the mammary lobes. And approximately 15 to 20 numbers होता है. Mammary lobes का number कितना है ना? 15 to 20 per mammary gland with mammary lobules. ऐसा नहीं कि खाली लोब्स प्रेजेंट है. लोब्स को अगर हम और मैग्नीफाई करेंगे और थोड़ा सा बेटर वे में डिस्कशन करेंगे तो उसमें बहुत सारा लोब्यूल्स भी होता है, छोटा छोटा पार्ट. Now the next point is this is alveoli, that is mammary alveoli. हम previous class में पढ़े थे कि under the influence of which hormone the formation of the alveoli takes place during the that is pregnancy ना, progesterone. पढ़े हैं कि प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है ना, ये जो मेमोरी एल्वियोली उसका नंबर को इंक्रीज करना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सो दैट द मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ मिल्क विल बी स्टोर्ड. एल्वियोली में ग्लैंडुलर टिश्यू होता है विथ ग्लैंडुलर टिश्यू and that glandular tissue will secrete what? Milk. And alveoli क्या करेगा? Stores the milk. This is mammary tubule. Mammary tubule gives rise to mammary duct. बात को समझे? मेमोरी ट्यूबुल कौन सा है, मेमोरी डक्ट कौन सा है? मेमोरी ट्यूबुल्स और द नंबर ऑफ मेमोरी लूप जितना होगा उतना ही मेमोरी ट्यूबुल होगा. समझे? मेमोरी ट्यूबुल्स rejoin to form what? Memory duct. Memory duct opens into the ampulla. That is mammary ampulla or lactiferous sinus. Mammary ampulla or lactiferous sinus then gives rise to lactiferous duct. Lactiferous duct open into nipple. और आप लोग देख सकते हैं निपल के चारों तरफ एक हाइपर पिगमेंटेड एरिया है and that is called as what na, areola. So areola actually hyper pigmented area. That hyper pigmented area मतलब with high more quantity of pigment, and that is why it is colored, maybe pink, maybe dark brown, maybe black. So that is called as areola, and that contains what na, areolar gland. And what is the function of areolar gland? Now this areolar gland is actually modified oil gland. मॉडिफाइड ऑयल ग्लैंड होने से क्या होगा? लुब्रिकेशन करेगा कि नहीं? लुब्रिकेशन ऑफ व्हाट ना, लुब्रिकेशन ऑफ निपल.
So when the baby will suck to get the milk from the mother, that nipple should be lubricated. Otherwise, that become dry and the sucking of the baby is not become perfect. इसीलिए ये lubricate करता है nipple को by means of the areolar gland present in the areola. Clear है? Now the next is different type of glands, sorry, different type of tissue are there. जैसे कि first रहते हैं यहाँ पे, this is called as fibrous tissue. This is fibrous tissue. This is adipose tissue. This is interlobular connective tissue. How many different type of tissue are present? एक तो glandular tissue को underline कर देता हूँ. Fibrous tissue, adipose tissue, and interlobular connective tissue. Glandular tissue present in the alveoli of the mammary lobes, formation and secretion of milk. Fibrous tissue present कहाँ पे देखिए तो? It is present around the alveoli and present around the duct. दिख रहा है तो? Function क्या हो गया? ना it is support alveoli and duct. Adipose tissue shock absorber का काम करेगा. And that also determine the size of the breast. इंटरलोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू किस किस के बीच में देखिए, इन बिटवीन द लोब्स दिख रहा है, तो किसको सपोर्ट देगा? वो लोब्स को सपोर्ट देगा कि नहीं? सो दैट विल सपोर्ट द मैमरी लोब्स. दिस इज ऑल अबाउट द मैमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट. जितना डिस्क्रिप्शन चाहिए, जितना चाहिए मैंने एक ही साथ मेंशन कर दिया है, और ज्यादा नहीं चाहिए. आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? ये वाला सीक्वेंस, ट्यूब्यूल्स, डक्ट, एम्पुला, साइनस, देन निपल. आपको ये सीक्वेंस पूछेगा कि ट्यूबुल के बाद डक्ट है कि डक्ट के बाद ट्यूबुल. मैमरी ट्यूबुल्स, देन मैमरी डक्ट, देन मैमरी एम्पुला, लैक्टिफेरस साइनस, देन लैक्टिफेरस डक्ट. ये सीक्वेंस आपको पूछने वाला है. Complete. Approximately 1 to 2 liter per day secreted by a nourishing mother, or we can say the mother which feeding the baby, that is called as nourishing mother. So 1 to 2 liter per day. Composition देखें, water, फैट ड्रॉप्स होगा कि फैट ड्रॉपलेट होगा? ड्रॉपलेट होगा, मतलब ऑलरेडी इमल्सिफाइड फैट.
because the baby is very what delicate. You know, the digestive system is very poorly developed. We need to provide the milk which contains all the necessary or almost digested part. तो सिंपली डाइजेशन होगा एंड एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से हो जाएगा. समझ में आ रहा है? इसीलिए तो बोलते हैं कि मदर मिल्क इज बेस्ट फॉर द बेबी, क्योंकि मदर मिल्क में जो कंपोजिशन हम देखेंगे उसमें हर वो चीज अवेलेबल है जो ग्रोथ के लिए जरूरी है. डाइजेशन भी सिंपल होगा, एब्जॉर्प्शन भी इफेक्टिव होगा. वाटर, फैट ड्रॉपलेट, केजिंग याद है? मिल्क प्रोटीन इज कॉल्ड एज व्हाट? द केजिंग. मिल्क शुगर इज कॉल्ड एज व्हाट? ना लैक्टोज. मिनरल्स प्रेजेंट है but poor content in what? Na iron, because iron absorption is a very what? Na energy dependent process. It is a very complex process. Iron absorption बहुत complex process है, इसीलिए minerals में iron का quantity बहुत कम रहता है. Vitamins with less number quantity of what? ना विटामिन सी. ये है क्वेश्चन. तो मदर मिल्क में पुअर आयरन कंटेंट रहेगा, पुअर कंटेंट ना विटामिन सी. कोलेस्ट्रॉल तो पढ़े हो ना? इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट मदर मिल्क. With which antibody? And IgA provide which type of immunity? Active natural, passive natural, artificial natural, artificial, that is artificial active and artificial passive. क्या होगा? Natural active, artificial active, natural passive, artificial passive. चार ऑप्शन दिया है. IgA present in the colostrum, the first mother milk, provide which immunity to the infant or baby? ये नेचुरल प्रोडक्ट है कि आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है? हो गया नेचुरल. What is the meaning of active and what is the meaning of passive? Active means endogenous production of antibody. Exogenous supply of antibody will provide passive. तो यहाँ पे बेबी को, इन्फेंट को एक्सोजेनस एंटीबॉडी सप्लाई हो रहा है कि एंडोजेनस प्रोडक्शन हो रहा है? एक्सोजेनस सप्लाई फ्रॉम मदर. तो ये पैसिव हुआ कि एक्टिव हुआ? Natural process with passive immunity up to first 6 months, and that is why it is clearly instructed. Any kind of that is outsourced food should not be given to the baby up to the first 6 months. First 6 months तक सिर्फ और सिर्फ मदर मिल्क. To provide natural passive immunity to baby up to first 6 months. उसके बाद धीरे धीरे उसका इम्यूनिटी खुद से डेवलप होगा, क्योंकि वो फाइट करता रहेगा एनवायरनमेंट के साथ. एनवायरनमेंट में जो वायरस बैक्टीरिया उसके कांटेक्ट में आएगा, धीरे धीरे उसका एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगा. एंड हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि प्रोलैक्टिन इज हार्मोन सिक्रेटिंग द मिल्क, सो कॉल्ड एज the milk secreting hormone is prolactin, and the which is called as milk releasing or let down hormone, oxytocin. So oxytocin is called as milk let down or milk ejecting hormone or milk releasing hormone, and prolactin is milk secreting hormone. Any problem? चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं, that is homologous structure. कंप्लीट है?
होमोलोगस स्ट्रक्चर की बात करें, testis of male is homologous to ovary. Labia majora is homologous to the scrotum. मैं फीमेल मेल कर दिया सर, मेल फीमेल कर रहे हैं ना. तो scrotum is homologous to labia majora. Penis homologous to clitoris. ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Upper gland of male is homologous to Bartholin's gland. Prostate gland of male is homologous to Skinny's gland. ये 4-5 काफी. So I'm coming to the next topic, that is gametogenesis. First is spermatogenesis. It is a continuous process. हाँ, क्या हुआ? नहीं, फंक्शनली यहाँ पे हम नहीं देख रहे हैं. होमोलोगस मे बी फंक्शनली सिमिलर, मे बी डिफरेंट. होमोलोगस का डेफिनेशन क्या है? ऑरिजिन शुड बी सिमिलर. फंक्शन हो सकता है कि सिमिलर हो या डिफरेंट हो, दैट इज नॉट अ मैटर. फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑरिजिन सेम और डिफरेंट. जैसे कि बर्ड्स का विंग्स एंड पेटाजियम ऑफ बैट, दोनों का फंक्शन क्या है? फ्लाइंग. फंक्शन सेम हो गया, लेकिन होमोलोगस ही तो है. तो कंटिन्यूअस प्रोसेस, but that is takes place from puberty to death. So it is a continuous process. बहुत इजी है.
This is actually the multiplicative phase. मल्टीप्लिकेटिव फेज में क्या होगा ना, माइटोसिस होगा, कंटिन्यूअस माइटोसिस gives rise to the formation of, this is the germ cell or germ mother cell, and germ mother cell ये सब क्या है ना, डिप्लॉयड। माइटोसिस के वजह से ये भी डिप्लॉयड ही रहेगा। Now this germ mother cell, by means of the mitotic division continuously, they will produce what? Now numerous numbers of spermatogonia. तो स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे क्या है, डिप्लॉयड हुआ कि नहीं? Now the next phase is coming called as growth phase. ग्रोथ फेज में स्पर्मेटोगोनिया चेंज होके कन्वर्ट होके बनता है कौन सा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी वही डिप्लॉयड होगा। नो meiosis has been started till now. Now the next phase is the meiosis 2 will begin. Sorry, meiosis 1, then meiosis 2. So this is first is meiosis 1. And meiosis 1 आप लोग पढ़े कि it is a reductional phase. Gives rise to the formation of secondary spermatocyte. That is why secondary spermatocyte is haploid. Then it continue the meiosis 2. Meiosis 2 is a equational phase or division, and that gives rise to the formation of what as spermatid. So spermatids are also haploid. Okay. Now this phase is called as what? Now maturation phase. The multiplicative phase is indicated with what? Mitosis. Whereas maturation phase is meiosis. Now after that, the spermatid will be changed into spermatozoa. The process is called as what? As spermiogenesis. Spermiogenesis gives rise to the formation of mature sperm or spermatozoa. Immature नहीं हुआ, immature, I'm sorry. This is immature, not mature. Mature कहाँ पे होगा? Epidermis, याद है ना? And that is why it is also haploid. तो रेशियो क्या है? रेशियो क्या है? स्पर्मेटोगोनिया टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 1:1. स्पर्मेटोगोनिया टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 1:2. स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ 1:4. क्लियर है? वैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू सेकेंडरी 1:2. Each primary to spermatid spermatozoa 1:4. But secondary spermatocyte is to spermatid or spermatozoa 1:2. क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके आगे कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स व्हिच इन्वॉल्व द स्पर्मियोजेनेसिस। क्योंकि स्पर्मेटिड देखिए नॉर्मल सेल है विदाउट फ्लैजेला, मैक्रो स्ट्रक्चर with a large quantity of cytoplasm,
लेकिन देखिए स्पर्मेटोजोआ फ्लैजेलेटेड है, elongated है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म और ऑलमोस्ट एब्सेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, तो कैसे चेंज होता है? इसी चेंज को ही तो हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस एक टाइप का मेटामॉर्फोसिस हुआ कि नहीं? This is actually the metamorphosis which convert the spermatid into spermatozoa. We will discuss in the next class from this onwards.